What is happening? Good evening. कैसे हैं आप? मेरी आवाज साफ आ रही है? Are you able to see me and hear me clearly? Let me know. आज का प्लान केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड सेशन, हम लोग डिटेल में उसको खत्म करने वाले हैं. एंड बाय द वे वी डिड द होल लॉन्च सेशन एंड ऑल अ कपल ऑफ डेज बैक. आई नो केमिस्ट्री के हम लोग सेशन ऑलरेडी चला रहे हैं, एक दो हफ्ते से चला रहे हैं. The other teachers are also have started the backlog series मैथ्स में एंड फिजिक्स में अभिषेक जी हैं. So yeah, check those sessions out. यही चीज है जो मैं आपके साथ कर रहा था. I'm going to be continuing doing the exemplar sessions along with some advanced studies in the last 10 minutes. We'll continue this, and the only difference is I'll cover the पूरा syllabus. पहले सोच रहे थे I'll do 11th first and we'll do 12th, and we just consolidate all that and we're going to do it together. That's the plan. I'll give you like a proper plan on Monday. Hey, hemlo rec. Priyanshu rec. Yeah, good to see all of you here. Good to see you. I'll give you like a proper plan which I've shared on I've shared a rough plan with you guys on the Telegram groups. But yeah, proper plan will be shared with you by the team on Monday. I'm sharing this with you. यहाँ पे this is a screenshot of the plan that I submitted to the team, right? Telling them कि hey, मैं ये करने वाला हूँ आप लोगों के साथ. आप लोग in the sense you folks. ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आओ भाई, paste हो जाओ. All right, cool. This is what it is, and I'm going to like zoom in a little bit so that it's clear. Hold on. Yeah, let me change my pen. Yeah, multitasking is awesome. Ugh. Yeah, so this is what it is. This is the plan for till 16th March, 5 weeks and all जो हमने बोला था. I'll zoom in a little bit so you can look at what is relevant to you in the next couple of weeks. यहाँ पे मैंने JEE और NEET दोनों लिखा है because look, I know there are a lot of different students who are attending the session, right? There are people who are getting 99.9 percentile and also people who are looking to better their percentiles from the lower from the first attempt, right? So either way, I feel that maybe you should look at both JEE and NEET channels, right? जो मैं कर रहा हूँ especially chemistry के लिए and also for physics. On the NEET channel, I'm primarily doing NCERT subjective questions. I've told you that before. मैं सोचा आपको बता दूं exact plan के साथ. And on the JEE channel, I'm doing exemplar questions because वहां से directly सवाल आ रहे हैं JEE में. Or along with that, I'm doing the JEE Advanced content. Right? This is like a brief idea of what I'm up to. You're able to see my screen, right? I should check before I did all of this. Screen दिख रही है? नहीं दिख रही है? Screen दिख रही है? Hi. Good evening, Ash, Miss Rajput, Siddhant. Good to see all of you here. You're able to see my screen, right? Yeah, I'm trying like a different setup out. Okay, yeah. Screen दिख रही है so that my neck doesn't hurt. I've got a bigger monitor here जो पुराना था. So if you see me looking down, I'm going to be looking at your comments. All right, cool. Let's get started. You don't exactly know what Exemplar? Priyanshu, Exemplar is your best friend if your focus is going to be JEE Advanced. JEE Main. Because NCERT Exemplar, and this is directly from NCERT. ठीक है, मैंने कुछ अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाया. We did that. We put a lot of effort into our regular sessions throughout the year. But now, so close to the exam, I feel we should focus on just this. Now, if you're in 11th grade, this helps you, but 12th grade helps you. Either way, आपको help करेगा. Hold on, I'm just figuring out a bit of transition wala business just to make things a little bit nice and smooth for you. 0.7. If you're wondering what I'm doing, there's an effect called morph in PowerPoint. Ping me about it on Telegram and I'll tell you more about it. Okay, let's start. Write the Lewis structure for the following compounds and show formal charge on each atom. I'll tell you what. How about you? How do we make this one interactive, right? अगर करना है तो ठीक है. I'll draw the Lewis structure and then you help with the formal charges. Shall we do that? मैं Lewis structure कर डालता हूँ, आप मुझे help करिए with the formal charge. Cool. Okay, let's do that for this first question because subjectives वाला थोड़ा बहुत trade off होगा, right? So for let's start with the easiest one according to me at least. अरे यहाँ पे है ये भाई साहब. Okay, HNO3, which basically means NO3 minus. Okay, NO3 minus बना कैसे? History aside, NO minus ये पक्का है. एक ये है. What about the other two guys? There's like, okay, let me just draw them. I'll fill the other bonds in. Okay, this is not satisfied, so let's put a double bond here. 5 electrons, let's put a double bond here. Okay, so now what do we do? Is this okay? Does this look fine? So now I'm going to replace all of these with the Lewis structures, right? 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 and 2. और कुछ बचे हैं? हाँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5 6. ठीक है? That's what this negative sign means, right? This negative sign, ठीक है, means कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. If you want the पूरा structure, then I can draw it even like this. Now, can you tell me the formal charge on all of these things? Let's get started. जल्दी करते हैं. सबका बताओ formal charge. Hare Krishna Aditya, how are you doing? Chemistry is weak. Narsingh Sharma, all right, dude. You can score 60, 70 in advance. That's a lot of effort. It's going to require a bit of effort, bro. 60, 70 in advance is a lot of effort. Yeah, can we do this? Can we do HNO3? So there are 3 types of atoms, perhaps, right? Let's do atom number 1, atom number 2, atom number 3. Let's forget hydrogen. Hydrogen ka plus 1 or whatever. Let's forget hydrogen.
n is +5. Okay, how do we get to +5? फॉर्मूला कुछ था ना फॉर्मल चार्ज का, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या था, भूल जाते हैं कभी कभी, खैर अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, प्लस नहीं माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस, लेट्स जस्ट कॉल इट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, राइट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कभी कभी बोलते हैं ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स करो डिवाइड बाय 2, दैट्स द सेम एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यही हम लोग करेंगे। तो दैट विल बी 5, अनबॉन्डेड कितने, एक भी नहीं है, 0, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 5। इसको तो मुझे 0 लग रहा है, n का +5 आ रहा है, कैसे भाई, हाउ इज n +5? प्रवीण सिंह जी, मे बी आई मेस्ड अप, हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ी की हो, आई डोंट नो, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस, मुझे तो 0 लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी what do you call it, lone pair of electrons on nitrogen, या मैंने कुछ गड़बड़ी की, n is 1, wow, then मैंने कुछ गड़बड़ी, can you help me out, what did I do that was weird, game corner, how did you get that number, or did I draw the structure different from what you drew the structure, थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए, आपने जो किया मैंने जो किया उसमें क्या फर्क है, नो ओके 0 ही होगा ना, हाँ मुझे लग रहा था, सिंपल है, नो लोन पेयर, एग्जैक्टली। ऑक्सीजन का क्या होगा, लेट्स डू द सेकंड वन का क्या होगा, ऑक्सीजन में होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो है 4 जो है अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है और एक लोन पेयर है, आई मीन एक बॉन्डेड एक बॉन्ड है, राइट, 6, तो ये +1 लग रहा है मेरे ऑक्सीजन का, वाओ, +1 ऑन ऑक्सीजन इज रियली वियर्ड, +1 ऑन ऑक्सीजन इज रियली वियर्ड। बॉन्ड इसके एक्चुअली 2 हैं, एक नहीं 2 बॉन्ड है, हाँ ये ठीक है, दिस इज गुड। HNO3 में 2 बॉन्ड है, तो इसका हो जाएगा 0, सबका 0 आ रहा है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर सबका 0 आ रहा है, ठीक है, 5 माइनस हाफ इंटू 8, गेम कॉर्नर 8 कैसे, isn't it 1 2 3 4 1 2 3 4 5 10 नहीं होगा, गेम कॉर्नर look at this, if I were to draw the bonds 1 2 3 4 5 bonds मतलब 10 electrons, गेम कॉर्नर wouldn't it be 10, थोड़ा हेल्प करो मुझे यार, this is an interactive thing, right? H2SO4 में क्या करोगे, नो लेट्स गॉट फिगर दिस आउट, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है दिस ऑक्सीजन का कितना होगा, 6 माइनस 4 माइनस 2, अरे सेम ही हो रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, सबका 0 आ रहा है, छोड़ दो सबका 0 है, लेट्स मूव ऑन, सबका 0 है, राइट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मल चार्ज, बाय द वे, किसी को पॉइंट मालूम है, हम लोग करते हैं एनसीईआरटी में, मार्क्स मिल जाते हैं, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स लवली, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मल चार्ज, कोई सोच सकता है, विल टॉक अबाउट दिस मोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, हम लोग जब एडवांस का जो आइडिया करेंगे वहां पे हम लोग बात करेंगे पॉइंट क्या है, फॉर्मल चार्ज का पॉइंट क्या है, we'll address that then, okay, wait till the end, break के बाद we will talk about this, approximately कितना बज रहा है अभी, टाइम क्या हो रहा है, if you want to like go have a some chat and come back around 7:20 p.m. today, we will talk about this, कहाँ यूज होता है, all that, it's very interesting, सबका 0 हो गया, okay, हाँ NO2 का बनाते हैं, NO2, let's do NO2 now, चलो NO2 क्या होगा, NO ऐसा लगता है क्या, NO2, this looks a little funny to me, इसके तो लग रहा है कि दिस इज नॉट अ वेरी बैलेंस्ड आइडिया, राइट, मतलब ठीक है, दिस गाय इज सैटिस्फाइड, दिस गाय डजंट सीम टू वेरी सैटिस्फाइड, ओके, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आई कैन अस्यूम दिस टू बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बॉन्ड बनने के बाद सिंगल बॉन्ड ही बन जाता है, तो लेफ्ट लाइक दैट 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 4, हाँ 5 6 एक्स्ट्रा हो गया इसके पास, राइट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसके पास 6 थे, nothing, oxygen didn't participate in the bond, this was a coordinate bond, so I'm drawing it an arrow and I'm erasing the arrow, let me write it down ताकि आपको जो, अगर if you're looking at notes you don't get confused, coordinate, okay, cool, great, now let's do the same thing, 1 2 and 3, formal charge बताइए, जल्दी से बताइए formal charge, now let's increase the speed, n का क्या होगा, 5 minus 2 minus 3 plus 1, okay, then oxygen which is 2 का क्या होगा, 6 minus 6 minus 1 minus 1, 3 ऑक्सीजन का क्या होगा, 6 minus 4 minus 2 0, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं, ठीक लग रहा है, सो यहां पे क्या, -1 + 1 0, कूल, प्रियांशु यार देखो, अगर प्रियांशु थियरी चाहिए ना, प्रिंट कमेंट इसलिए मैंने डाला है, प्रियांशु उस पे देख ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आइडिया क्या है, एनसीईआरटी पढ़ ले, अदरवाइज यू पिंग मी ऑन डिस्कॉर्ड, सॉरी टेलीग्राम पे, तो है आप हो ही ना, यू कैन कम एंड हेल्प मी आउट, वी कैन चैट अबाउट दैट, ऑलराइट, या 1 1 0, ओके, -1, आदित्य भाई साहब, -1 नहीं होगा, दिस इज +1, दिस इज -1, दूसरे वाले ऑक्सीजन का, लेट मी हाईलाइट दैट विद डिफरेंट कलर, ये वाला ऑक्सीजन नंबर 2 व्हिच हैज अ सिंगल बॉन्ड, इसका -1 हो जाएगा ना, क्यों, देयर इज 6 बॉन्ड्स एंड 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था,
इसलिए 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन और एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यू गोइंग टू 2/2 व्हाटएवर लिख लो, या 2/2 लिखना है तो, बट एसेंशियली यही हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आइडिया प्रियांशु, एक और चीज हमको देखनी है ना, H2SO देखना है। वी लुक एट H2SO, जल्दी से देखते हैं H2SO को, एंड आई विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैन समबडी हेल्प दिस गाय आउट अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है। S 4 O मैंने बना दिए, अब 4 में से सिर्फ 2 पे ही नेगेटिव चार्ज होंगे, इसमें डबल बॉन्ड डाल दिए। दिस हाउ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, जल्दी से तुरंत बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें 3 टाइप के हो गए, 1 2 एंड 3, तीन टाइप के एटम्स है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट देम सेपरेटली। 1, you want to draw the electrons, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। how am I confident plus, ये क्या मैं कर रहा हूं, why am I putting 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। देखो यार, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तभी तो नेगेटिव चार्ज हुआ। एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। कूल, या if anybody has a doubt, so I'm just going through the basics of this stuff, okay। so खैर, हाँ, सल्फर का क्या होगा, 6 माइनस 6 हो गए 0, कोई लोन पेयर कुछ है ही नहीं, और बॉन्ड्स कितने हैं, 6 मतलब 0। नंबर 2, ऑक्सीजन का कितना होगा, सेम आइडिया, 6 माइनस सल्फर, ऑक्सीजन तो सेम ग्रुप में है ना, तो इसका भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर इसमें है 4, 2 बॉन्ड है, इसका भी 0। आई 0 आ रहा है क्या सबका, ये देखो, लवली। व्हाट अबाउट 3, अब ठीक है, इफ यू डोंट लाइक दिस नेगेटिव चार्ज, वी विल नॉट पुट नेगेटिव चार्ज, लेट्स पुट अ H हियर, फिर भी ये सेम रहेगा, ठीक है। The only difference will be instead of 4, this will become 2 and this will become 3. In that case, formal charge 1 हो जाएगा। So that makes things interesting. Does it not? अगर यहाँ पे ये, अरे गलत जगह डाला मैंने, सॉरी, मतलब ये क्या हो गया, my bad, H will be here. This was correct. -6, 2 वाला सही था, 2 वाला was 6 minus 4 minus 2, this was fine। 3 वाले का हम लोग देख रहे थे कि एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन इज बॉन्डेड, इज नॉट नॉन बॉन्डेड, राइट। सो 6 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फिर से 2 बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, अलग अलग कलर है, या बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, इसका भी 0 हो गया, 0 0 0। आए, या HNO3, you think there'll be a coordinate bond instead of a double bond, right? अच्छा, वेरी नाइसली स्पॉटेड। आज रेटिंग कोई तो बोले, कोई बोल नहीं रहा था। मैंने NO2 के बारे में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बात की, तो HNO3 में क्यों नहीं होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा आपने बोला, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। सो वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5, बट अगर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया तो सिंगल बॉन्ड नहीं हो जाएगा। प्रवीण भाई साहब, इफ आई मेक इट, सो यू आर सेइंग इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग ये कर लें, यू आर सेइंग इंस्टेड ऑफ दिस वी डू दिस, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग। अब इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। गेम कॉर्नर, व्हाट स्ट्रक्चर आर यू सेइंग, ओके ठीक है, HNO3 का लुईस स्ट्रक्चर, ओके कूल, दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। सो यू आर सजेस्टिंग दैट दो जगह, अच्छा, तो ये वाला एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो फिर भी नाइट्रोजन रिमेन्स टू बी 0, राइट। ऑक्सीजन का थोड़ा बदल जाएगा, इज व्हाट यू गाइस आर सेइंग, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सो नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 3 का तो था वही रहेगा, 4 वाले का क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन का होगा 6 माइनस 1, ओ मतलब इसका -1 हो जाएगा। एंड नाइट्रोजन ऑल्सो विल बी, एक बार फिर से चेक कर, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 थे वैलेंस, नन एंड 1 2 3 4 5, 1 2, अच्छा समझ गया। बट देखो इसमें I get what you're saying, +1 -1, ठीक है, I get it। Game corner and Praveen, I understand what you're saying। Understood, ठीक है, बढ़िया, very nice way of doing it। So it can be either this or that, sure, cool, thank you, yeah, this makes a lot more sense। अच्छी बात है, आपने figure out किया। I like that you're awake, Praveen and Game corner, lovely, yeah, I like that you guys are paying attention, that's brilliant। Shivangi Maurya saying +1 -1 0। Shivangi was talking about the previous one, NO2 के बारे में, H2SO4 में सब 0 है, ठीक है, excellent। We spent a good 15 minutes on the first couple of questions, that's okay। Formal charge was, it's good to get it out of the way, ठीक है, because अगर जबरदस्ती सवाल आया तो ये सब में आप लोग अटक जाओगे, and this is literally NCERT के सवाल मैं कर रहा हूँ, कुछ बड़ी चीजें नहीं कर रहा हूँ। And Game Corner and Praveen, thank you for paying attention, you have helped everybody out by doing that, thank you so much, that's brilliant। Okay, now let's look at the next question, ठीक है। The energy of all, any doubts, are we good here, सब ठीक है ना। Let me just check if the chat is going okay, hold on, all right, yeah, great।
द एनर्जी ऑफ, अब हम करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात. एनर्जी ऑफ सिग्मा 2px molecule orbital is greater than blah blah blah. In nitrogen, write the complete sequence of energy levels in increasing order of energy in molecule. Compare the relative stability and magnetic behavior of the following species. Okay, दो चीजें करने बोला है, पूरा लिख लेते हैं. पूरा लिखने में क्या कोई बड़ी बात नहीं है. हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे 1s और 2s में, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार में. ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल डू फॉर द फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स. बाकी बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स. These 6 इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर क्या हुआ? यहां पे लिखा हुआ है. दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर. पहले ये फिर ये. ठीक है, ओके. दिस इज गोइंग टू बी लोअर देन दिस. इफ यू वांट टू लुक एट दिस स्पेसिफिकली, एनसीईआरटी में ऐसे लिखते हैं, दे पुट अ लेसर देन साइन टू सो दैट यू नो कि इट्स लोअर. ओके, नाउ हमको बताना है स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक बिहेवियर. देयर इज अ ट्रिक टू दिस, वी विल टॉक अबाउट द ट्रिक एज वेल, राइट. 14 मतलब N2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3. नाउ वेदर आई ऐड इलेक्ट्रॉन और आई रिमूव इलेक्ट्रॉन, इट बेसिकली just reduces the order by this. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 14, 15, 13, all the way up to 12, 16, 17. This works till 18. सब जगह काम करता है. ठीक है, so this keeps increasing. Okay, N2 is diamagnetic. Are you sure about that? Yes, looks like N2 is diamagnetic. Good job. N2 is diamagnetic. बिल्कुल सही बोला. अब N2 अगर फिगर आउट कर लिया तो बाकी भी कर सकते हैं. N2 प्लस क्या होगा? N2 प्लस is just going to be 2pz1. Okay, N2 माइनस, ओ तो पाई स्टार में चला जाएगा. तो दिस गोइंग टू बी पाई स्टार, कौन सा? पाई स्टार 2px1. ओके, ठीक है, तो दिस इज पैरा, ये भी पैरा है. बचा क्या? N2 2 प्लस. 2 प्लस मतलब ये भाई साहब चले जाएंगे. तो इट्स गोइंग टू बी, ये भी डायमैग्नेटिक होगा. 2px, दिस थिंग इज इक्वल टू 2p स्क्वायर y, 2py स्क्वायर. आई नो, फनी थिंग टू से स्क्वायर. ये भी डायमैग्नेटिक है. ठीक है, सो दीज आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ये दोनों है पैरा. या लेट्स राइट दैट प्रॉपर्ली एंड नाइसली हियर. कौन से दोनों है पैरा? ये दोनों है पैरा, ये दोनों है डाया. एंड इंटरेस्टिंगली एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉन से देखो उससे क्लियर हो जाएगा. ये 14 है, 15 है, 15 नहीं सॉरी, ये 13 है, ये 15 है और ये 12 है. सो 13 एंड 15 आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तब तो देयर डेफिनेटली गोइंग टू बी पैरा. सो सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड बाकी यस, N2 2 माइनस विल बी पैरा also because इसका जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपने इसमें पूछा तो नहीं है, बट इफ आई वर टू आस्क योर N2 2 माइनस, वो भी होगा पैरा. ठीक है, बिकॉज द सेकंड इलेक्ट्रॉन आल्सो goes in this guy here. 2, I keep forgetting how to write it. Pi 2px star 1 equal to pi 2py star और 1. क्यों? क्योंकि ये भाई साहब जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्टेबिलिटी, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 14 इज सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 15 और 13 इज इक्वल स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5, एंड जो 12 है दैट इज गोइंग टू बिकम 2 बॉन्ड ऑर्डर, मतलब दैट इज द लीस्ट. सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी N2 ग्रेटर देन N2 प्लस इक्वल टू N2 माइनस ग्रेटर देन N2 2 प्लस. ठीक है, दिस इज द आंसर टू दिस. वी गुड? बढ़िया, आगे बढ़ा जाए. Where will we get the PDF? Where will we get the PDF? Wow, bro. We'll get the PDF on Telegram, bro. Wow, you guys are lovely. Yeah, I can't even pronounce your name. You are like VNM. You will get the PDF on Telegram. Come check it out. Join the Aakash channel or join the one that's on the links. जो pinned comment है वहाँ पे भी you will get it there. N2, आदित्य बोल रहा है N2 greater than N2 plus, greater than N2 minus, greater than. It won't be equal stability, IIT and Aditya. N2 plus equal to N2 minus. Why are we saying ki it is going to be acha? I understand why you're saying stability because okay, let me think about what Aditya is saying. Aditya is saying N2 plus is more stable than N2 minus. N2 minus में acha. Okay, I understand that. N2 plus, let's take a different color here. That's a wonderful thing that Aditya has said. N2 plus would be more stable than N2 minus because इसमें जो है bonding orbital है, इसमें anti-bonding molecular orbital है. Possible. I'm going to have to get back to you on that, okay, if that's the case. Yes, Aditya, I get what you're saying. बिल्कुल सही. अगर आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इफ यू लुक एट इट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, देन यू कैन से कि यही है. बट इफ यू कीप इन माइंड कि भाई साहब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, बिल्कुल सही. या सो बी केयरफुल ओवर हियर. इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट दैट ही हैज पॉइंटेड आउट. वी आर गोइंग टू पुट दिस एज ग्रेटर देन बिकॉज हियर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है and this guy is on bonding molecular orbital. ठीक है, lovely.
थैंक यू, थैंक यू। सो जस्ट बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर हम लोग स्टेबिलिटी की बात एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। दिस इज द रीजन आई पिक दिस क्वेश्चन आउट एंड आई रियली लाइक दैट ऑल ऑफ यू आर सो एक्टिव ऑन द चैट, यू आर नॉट लेटिंग एनीथिंग गो बाय। हम लोग छोटे छोटे डायरेक्टली एनसीईआरटी सवाल कर रहे हैं एग्जाम्पलर से, बट दिस इज शार्पनिंग योर स्किल्स इन दिस चैप्टर। वेल डन, वेल डन, वेल डन, लवली, स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। अगला कौन सा सवाल किया जाए? हाँ, ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑन द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 एंड O2? N2 में मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, आई एम मेकिंग इट N2 प्लस। हियर O2 में भी सेम चीज हो रही है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉन्ड ऑर्डर? कैन यू डू दिस? ये बहुत जल्दी, नाइस क्वेश्चन राइट प्रियांशु, एग्जैक्टली, इट्स जस्ट फ्रॉम एग्जाम्पलर। मैं कुछ, आई डोंट टेक एनी क्रेडिट फॉर दिस, एनसीईआरटी इज ब्रिलियंट, इट्स यू स्टूडेंट्स हैव टू मेक श्योर आप एनसीईआरटी पढ़ो, इसलिए मैं एग्जाम्पलर के सवाल आपके साथ कर रहा हूं। इसमें क्या इफेक्ट होगा, इसको बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं। वी कैन डू दिस एक्सट्रीमली क्विकली, या एक्सट्रीमली क्विकली। यू नो दैट 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 16 इलेक्ट्रॉन्स का होता है 2। क्यों यार, जस्ट डू दैट नो, 14 15 16, लिटरली जस्ट राइट इट डाउन अगर भूल गए तो। या सो दिस इज 3, दिस इज 2.5, दिस इज 2 एंड सेम वे 2.5 एंड 2। ओके, ये कितना है? दिस इज गोइंग टू गो टू 15 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, ये हो गया 13 इलेक्ट्रॉन्स। So in both these cases, something interesting happens. इसमें bond order, the new bond order is going to be 2.5. But look at this. इसका bond order बढ़ रहा है. This also becomes 2.5, which is interesting. Not 25, 2.5 obviously. Pretty cool, right? Now, both N2 and O2 lost electrons, but दोनों का जो है bond order अलग तरीके से behave कर रहा है. इसलिए molecular orbital theory is fascinating. It's extremely fascinating. It's not something you can mug and vomit. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. Yes, exactly, Rek. Lovely. आदित्य बिल्कुल सही बोला. Praveen, 100%. I haven't seen you before, Praveen. Thank you for joining us. Lovely, lovely, lovely. Now हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. Let's skip a couple of questions ahead. I had some questions planned for you, but you spent a bit of time on the formal charge one. That's all right. बहुत बढ़िया, मजा आया उसमें. Okay. Okay, let's do this one. Let's do this one. Simple one. Simple idea. Can you arrange these following bonds in the order of increasing ionic character, giving some sort of a reason? Now, where is this going to help you in organic chemistry? I just did a session with your NEET friends, और वहां पे मैं उनको लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताया अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टू आयोनिक इक्विलिब्रियम. बॉन्डिंग के बेसिक्स आर आल्सो नीडेड फॉर ऑर्गेनिक. अगर कोई बॉन्ड हैज आयोनिक कैरेक्टर, मतलब इट कैन बिहेव वेरी इजीली लाइक एन एसिड, और वो H प्लस को दे देगा आसानी से. ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है, राइट? दैट्स द मेन आइडिया हियर. और H इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. Yeah, out of all of these, H is the least electronegative. You can check that out from the, Pauling scale या कोई भी scale, Mulliken scale, जो भी scale देखो, H is the least electronegative among these other elements. And oxygen नहीं. Fluorine is the most electronegative. Then comes oxygen, then comes nitrogen, then comes carbon. ठीक है? Cool? Yeah? Who's sending this emoji? Salafi. Okay, good. मजा आ रहा है, अच्छी बात है. Exactly, Priyanshu. बिल्कुल सही. More the electronegativity का difference, more ionic. So this is the order, right? 1, 2, 3, 4. FH greater than OH greater than NH greater than CH. और interestingly, this is the same order of, अगर आप pKa values देखोगे आप सबके, right? This is the same order that's going to follow. Not pK values, sorry, K values. pKa values तो कम होती जाएंगी. वो हम लोग बात करेंगे. FONC, funky. All right. बढ़िया. I like how we're rolling with these questions so quickly. It's lovely. Okay. All right. Now here is a changing gears थोड़ा सा. Hybridization की बात करते हैं. Hybridization, right? Predict the hybridization of each carbon in the molecule of organic compound given below. Also indicate the total number of sigma and pi bonds. और trust me on this. ये भाई साहब यही सब ऐसे ही सवाल आ रहे थे. Literally ऐसे सवाल आ रहे थे JEE main में. ठीक है? Am I pointing the right side? I should pointing here, not this side. ऐसे ही सवाल आ रहे थे JEE main में. ठीक है? काउंट करो सिग्मा पावर, भाई कर लेंगे काउंट, क्या फर्क पड़ता है? बताओ हाइब्रिडेशन, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा आसान हो गया. हाँ, किसको मैसेज करें? सलाफी. H निकाल के बाद नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, बिल्कुल सही आदित्य भाई साहब. या सो sp sp2 sp3 प्रवीण, sp sp2 sp3, चौथा वाला भूल गए प्रवीण? ये दोनों का सेम होगा, लीनियर है, sp हो गया. 2 का क्या हो गया? How do I know sp sp3? भाई थोड़ा सा रिवीजन कर ही लेते हैं, राइट? sp
sp2 sp3 कैसे पता चलेगा? 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? लास्ट सेशन मैंने किया था, बट एक छोटा सा आधा मिनट का रिकैप कर लेते हैं. S और P कंबाइन करेंगे तो गिव मी इसका शेप क्या है भूल गया मैं. हाउ डू दिस लुक लाइक? समथिंग लाइक दिस. इज इट? दिस इज द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, जो भी है, ठीक है. एंड द अदर वन इज एंटी बॉन्डिंग, जो भी है. इसको हम लोग कर लेंगे. I've completely, I just blanked out. What does it look like? Here, anyway, what you do is you combine one S and one P and you get 2 equal energy sp orbitals, right? So basically you count the number of sigma bonds and lone pairs if any. अभी इधर lone pair तो है नहीं, तो कार्बन में हम लोग ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. When you talk about organic chemistry, it is not very useful. But if you look at say IF5, right? IF5 में 5 bonds हैं, उसके साथ एक lone pair भी है, right? So you have 6 quote unquote bonds. Anyway, ये तो बहुत straightforward, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा ज्ञान दे दिया. There is sp, there is sp2, which has 3 sigma bonds, and this one is sp3, yeah, 4 sigma bonds, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, and this last guy again is sp2. Let's move on, इसके बारे में ज्यादा टाइम. अच्छा, sigma bonds कितने हैं? क्या sigma bonds कितने हैं? कोई बताएगा? Relevance of this lecture, that's a great question. What we actually got from it. Karthik, hopefully you get good at chemical bonding. Karthik, that's the relevance of this lecture. We are doing a revision session because JEE main aa raha hai pass mein. It's about a month away, right? Almost a little more than a month away. So the relevance of this lecture is कि I am encouraging you to read the NCERT Exemplar textbook, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, और आजकल तो लग रहा है कि डायरेक्टली केमिस्ट्री में NCERT Exemplar और NCERT सवाल आ रहे हैं. That's the relevance according to me. If you want to see the general पढ़ाने वाले सेशंस, ऊपर है on the docs.google.com. On that thing you click on that and you'll be able to see those sessions there. Okay, आंसर क्या है? 11 सिग्मा. आदित्य, एक और आदित्य आ गया. You're in 10th class, Salafi. Wonderful, Salafi. Good to know that you're here. ये वाला आप भी कर सकती हैं सलाफी, because this is carbon and its compounds. बोर्ड्स खत्म हुए क्या सलाफी? That's why are you here? या फिर नहीं चल रहे हैं? March 2nd को आपका साइंस का पेपर, आई थिंक, नो? 11 सिग्मा 4 पाई. 11 सिग्मा 4 पाई. ओके, 4 पाई एंड 3 पाई. तो कंफ्यूजन है पाई में. पाई में क्यों कंफ्यूजन है? पाई तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4. मुझे तो 4 पाई दिख रहे हैं. 4 पाई जो हम लोग सोते थे वो छत पे. आई नीड टू डू दैट. इज इनक्रेडिबली वार्म इन बैंगलोर, बट यहाँ पे छत है ही नहीं, खेत भी नहीं है. खैर, आई फील दैट देयर आर 4 पाई. सिग्मा कितने काउंट कर लेंगे? सिग्मा इज गोइंग टू बी जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ bonds themselves, right? So, oh gosh, I feel lazy about the counting of bonds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. तो 11 सिग्मा एंड 4 पाई bonds. ठीक है, 4 पाई, exactly 4 पाई. Priyanshu, hashtag 4 पाई. That's what we got to do, because you didn't realize 11th NCERT importance till now. Okay, all right, cool. नहीं, तुम्हारे, that's what you feel, no? When you say something relevant that really helps you, it seems like कि मैं directly सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ. That's the wonderful thing about just following process. I'm not taking any credit for this. I just follow process. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. Wonderful. We are at the halfway mark. We're about half an hour in. Let's look at the next question. अगला कौन सा किया जाए? This one's easy. I'm going to give you another question that's interesting a little bit. Oh, this one's nice. I like this. Okay. This one is nice. ये इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा, not too much. Maybe instead of a 30-second thing, it'll take you 1 or 2 minutes. Elements X, Y, and Z have 4, 5, and 7 valence electrons respectively. Write the molecular formula of the compounds formed by these with hydrogen specifically. मतलब XH, YH, or XH, X, YH, X, and ZH, Z. ये compounds बनाइए. Why am I writing this? Because अगर इसमें से कोई phosphorus है तो PH3 और PH3 तो नहीं बनता है, PH5 बनता है, right? तो वही हम लोग देख रहे हैं क्या? PH3 भी बनता है. What am I saying? PH3 भी है, PH3 ही बनता है. इनफैक्ट PH5 नहीं बनता है, उल्टा बोल रहा था. Ignore P. Which of the following compounds will have the highest dipole moment? Wonderful question. I absolutely love it. So ये छोटे x की वैल्यू क्या है? What is this value? What is this value of this small y? And what is the value of this z? You have to tell me that, and then go to dipole moment figure out करने का. अरे वाह, आप लोग ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं. सोमेश प्लस था, there was a plus advanced.
So in the last 10 to 15 minutes of my sessions, I talk about very interesting ideas that will help you figure out things for advanced. Somesh, you can check out my other sessions where I've done this for the last 5-6 sessions मैंने किए, 4-5 sessions किए. Yeah, I either do a question or something theory wise. So in chemical bonding, we do both. थोड़ा बहुत theory, थोड़ा बहुत questions. In the one before, in atomic, we did like hardcore questions. क्या है आंसर इसके? Okay, XH4, YH3, ZH, says Priyanshu, and Rek. So P and R, Priyanshu and Rek have given me this answer. HZ, अच्छा, not ZH, but HZ. Okay, ठीक है, cool. HZ. Why did you change that, Rek? I know why you changed that. Lovely. Divya is saying 4, 3, and 1. Lovely. You all figured out. बहुत बढ़िया हो तुम लोग. Highest dipole moment is for HZ. Yes. The reason why Rek changes answer from ZH to HZ because he realized you never write CLH, you write HCl. You write the less electronegative element first. Next, right? In this case, for acids especially. Here, it doesn't matter. But good, very good spot. Okay. And CH4 में चक्कर ये है ना. And by the way, why is it that dipole moment का खराब होगा? Because look at this. Look at this. If I draw CH4 or say XH4 because I don't know what X is, right? Example ले लो CH4 का, ठीक है. Look at this. Dipole moment तो उसका है ही नहीं. No dipole moment. What about PH3? It has a dipole moment, right? इसका डायरेक्शन होगा इसमें, H इधर मतलब H will also be okay. It has a upward dipole moment, okay. But सबसे ज्यादा dipole moment होगा इसका because shall we check actually dipole moment between H and Cl versus PH3? You guys can check. आप लोग check कर लेना. इसका dipole moment सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बोला. Yes, electronegative difference है. I have a little question though. PH3 और HCl में ज्यादा dipole moment किसका होगा? Because dipole moment is Q times D. थोड़ा सोचो. I don't think we can answer this question with this data. थोड़ा और डेटा चाहिए होगा, but that's my initial thing. Let's check what NCERT is saying. But मैं थोड़ा सोच रहा था अभी while I was saying it, मुझे लगा कि इतना डायरेक्ट नहीं है. Like between, see now if I do NH3 and PH3 फर्क पड़ जाएगा. So let's do NH3 versus HCl. किसका ज्यादा dipole moment होगा? According to you. थोड़ा सोच के बताओ. We'll spend like 30 more seconds, not too much. Yeah. H and Z का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, बट क्या हम लोग बोल सकते हैं फॉर श्योर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सी NH3 का डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दे आर ऑल एडिंग अप इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन. इसलिए मैं पूछ रहा हूं. आई डोंट नो, देयर आर 4 ऑफ देम. ठीक है, HCl में बस एक ही है, Q times D एटसेट्रा. पता नहीं, आई डोंट नो. Cl strongly pulls electron. Yeah, it's okay. Yeah, absolutely. I honestly don't know. मतलब मुझे, मैं I'm not making this up. Just while I was talking to you, I felt like ये तो अजीब लग रहा है. Let's see. NH3 का dipole moment कितना होता है? I think कुछ 1.6 diopter. No, 1.46 diopter. Okay. NH3 का 1.46 diopter नहीं, by dy. I think I was talking to a student about physics, so I keep saying diopter instead. Yeah, dy. Sorry. NH3 का इतना हो गया, and HCl का कितना हो गया? HCl नहीं, HF ले लेते हैं because same group में लेते हैं. HF का dipole moment is 1.91 D. Okay. HCl का कितना होता है वो भी एक बार देख लेते हैं. Just for the heck of it. What are we losing? Now this is a beautiful Saturday evening. HCl is, अरे ये देखो, this is the googly. HCl is 0.86 D by bro. देखो, मैं बोल रहा था it is not that straight. ये आंसर इन लोगों ने NCERT ने बहुत चीजें लिख दी. मुझे लग रहा था कुछ दाल में कुछ काला हो सकता है. खैर, let's look at PH3 dipole moment. Phosphine का बहुत कम है. PH3 is 0.58 D by. ठीक है. अब what is the moral of the story? अगर आप same period, I think I would change this question to say same period में है सब. Okay, if in same period, then HZ will have the highest dipole moment. ये NCERT में लिखा नहीं है, but मैं आपको नंबर I've showed you, right? पूरी दाल काली है. HCl more in case of PH3. HCl, हाँ बिल्कुल सही, exactly what Praveen said. Moral, read NCERT, but वो भी आंख बंद करके रट्टा मारने का नहीं करना है. You have to question NCERT because NCERT ने कुछ open-ended चीज रख दी. Like this is a little open-ended, right? If you do a little bit of analysis भी कुछ नहीं, मैंने गूगल किया यार कि क्या होता है dipole moment, उससे लगा कि ये तो कुछ अजीब लग रहा है. While I was talking to you, I thought ये तो कुछ होना चाहिए. खैर, how much time do we have? Keep looking at time. I'm very particular about time. अगला कौन सा सवाल करते हैं? चलो थोड़ा एक दो टाइम पास क्वेश्चंस कर लेते हैं. नहीं, let's do good ones. I don't want to do a time pass ones. ठीक कर लेते हैं टाइम पास वाला. Let's do a time pass one. Predict the shapes
of the following molecules on the basis of hybridization. ये क्या हो गया? 49. Let me go to slide number 40. Bro, I don't know what happened here. I guess typing में कुछ अजीब चीज हुई. 49 now. Slide number 35. 30, 30, 35, 30, 30, 35. कहाँ गया? Yeah, I'm fixing the slide. आप उसका आंसर बताओ. ON should be here. अरे? ON, bro. All right. Now we good. Control A, Control C, Control A, Control V, Control A, Control V. Easy, very doable, but कर लो, try करो. एक दो आसान सवाल भी तो होने चाहिए. एक दो, हाँ, if different then a problem. Yeah, make structure analyze according to vector. आदित्य, NCERT बाप रे, यार इसी से डायरेक्टली आ रही चीजें. आप लोग कोचिंग में बहुत हजारों चीजें करते हो, बस NCERT कर लो, you will ace JEE main. Trigonal, planar, tetra, linear, pyramidal. Bro, what did I do in my copy pasting? ये N weird क्यों हो गया? क्या हुआ तेरा वादा ये कसम. Now it's gotten better. Okay, cool. Alright, you don't have to write in words. You can bent नहीं linear. हाँ, देखो CO2 वही bent कौन लिखा? मैं देखा भी नहीं. तुमने अगर तुम ये sorry नहीं बोलते मैं देखता भी नहीं. ठीक है? Yeah, absolutely, it's linear. If you draw it very quickly, this is how I draw it, right? These are all CLs. These are all H. बीच वाला है C. बीच वाला है B. ये कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन. And you'll notice, why did I do this? Why did I get so lazy? I know it is CO2, but in hybridization I only care about sigma bonds. बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ. हो सकता है कोई assertion reason सवाल आ जाए. I would definitely put an assertion reason question saying कि इसकी hybridization है ये और something you count pi bond don't count. कुछ तो कुछ मैं 100% सवाल डालता इस पे क्योंकि स्टूडेंट्स मत ब्रो. खैर anyway, sigma bonds plus lone pair. You've got to count sigma bonds plus lone pair. Predict the shapes. Shape to your right is pyramidal. ठीक है? sp3, sp, sp3, sp2, trigonal, planar. ये है tetrahedral. Absolutely right. ये है linear and ये है pyramidal. Trigonal, planar. All right, let's go to the next one. जल्दी किया. Nice. Okay. Easy question coming up, which we will skip. Let's get to this one. This one's interesting. Try this. इसको भी आप लोग जल्दी से कर सकते हो. Match the column with types of hybrid orbitals. अब shape की बात नहीं कर रहे हैं. Now we're going straight into what I've been telling you to be careful about, which means account for क्या बोलते हैं उसको? Account for lone pairs as well as bond pairs, right? दोनों को account करो to get hybridization. That's it. Please करिए इसको कोशिश. इसकी कोशिश करिए. I know मेरी हिंदी माशाअल्लाह है. बैंगलोर में रहा हूँ कुछ 20-25 साल. So it's a byproduct of that. Yeah. All right. Fixing slides on the fly. कुछ जगह randomly कुछ चीजें आ रही थी वो जो मुझे दिख रहा था. I'm just fixing that. If you're wondering what I'm doing. Coco on the board. What is CO? Coco, the movie. It's a nice movie. Coco is a nice movie. इसको करते हैं. Okay. Priyanshu like 2A. प्रियांशु के लिए 2A कर देते हैं. एक बात बताओ प्रियांशु, why sp32 and not d2sp3? Why not this? Why not 2B? रेक ने सीधा पूरा आंसर दिया. ठीक है. 1C sp3d. हाँ ठीक है. कैसे? SF4 में है. Let me write the number of bond pair and lone pair. Bond pair, lone pair. मैं आप लोग आंसर दीजिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. Bond pair 4, 5, 2, 4. Lone pair 1. इस पे है क्या lone pair? हाँ इसमें भी 1 है, इसमें नहीं है. तो NO2 plus. हाँ, that's weird. Hold on. Wait a minute. NO2 plus. Oh, so it's not linear, huh? NO2 plus is bent. हाँ, दाल में कुछ काला है. sp3d. Okay. sp3d 1 and 5. sp3d2. Okay. sp2. Yeah, मुझे भी sp2 मिला, which means it's bent. NO2 is bent. Wow, that's fascinating. Yeah, this whole thing NO2 plus is bent. Okay. sp2 और ये तो tetrahedral है sp3. ठीक है, cool. By the way, why not d2 sp3? NO2 plus sp होगा ना? रेक बोल रहा है. बताओ. दाल जल गई. या मुझे लगा ये अजीब लग रहा है. This one looks weird to me. I thought it's 2. Let's draw the structure of NO2 plus.
NOO plus resonating structure है. This plus is basically here. जो electron इसके चला गया. Just NO2 will be bent. Right? NO2 plus is going to be linear. I agree. NO2 plus should be sp, not sp2. देखो यार ऑप्शन में sp2 है ही नहीं. ठीक है? That's a hint. Hence it should be sp. ठीक है? Not sp2. Okay? Because F is a weak field ligand, says Praveen. Okay, that's a nice thing. I like what Praveen is saying. Thank you. Praveen, man, I like the attention to detail. You never saw B, Priyanshu. JEE Advanced के लिए करें. Somesh, I'll be very upfront with you. JEE Advanced सिर्फ exemplar से नहीं होगा. ठीक है? Exemplar is for JEE Main. Advanced के लिए आपको थोड़ी और थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अच्छी बुक्स के से. ठीक है? उस अच्छी बुक्स का हम लोग कुछ सवाल करेंगे, सब्जेक्ट सवाल. So at the end of last way, अभी 10 मिनट बाद we'll do a couple of questions that are interesting. JEE Advanced के लिए वो अच्छा होगा. ठीक है? Cool. दाल ज्यादा खाली नहीं हुई. Bro, I'm getting black dal for dinner. Thank you for reminding me. I'll just order my food. You guys are awesome. दाल वाल कुछ नहीं जली. दाल अभी ऑर्डर कर रहे हैं. रुको. I have to order food for my father and me, which I will do right now. I always forget. The idea is that I order around 7:10. तुम लोग इसका आंसर देख लो. This is the answer. You start solving the next question, then I'll order food. Okay. Yeah. So very nicely, somebody said that it is not D2 sp3. Was it, Praveen? But sp3 D2 because of this ligand business. Yeah, it's not strong. All right. Yes, exactly, Karthik Jump. We are covering NCERT Exemplar, and the last 10 minutes we'll talk about some ideas that will help you in the advanced. Yeah. नहीं, Rick, मैंने बंद करके रख दिया. Bro, I like shut it down. That's why. So if you shut it down, guys, it only hibernate से होता है. This hibernate thing doesn't really work. Yeah, absolutely. Okay, next question. Try this one out while I order food. Similar lines. जल्दी कर लो. Take 2 minutes to do this. Anand. Yeah, try this one out. Very doable. इस बार shape निकालना है. ठीक है? Be careful. Shape निकालना है. Wow. Okay. कहाँ गए? अरे यार. What? There you are. आंसर बताइए. खाना भी मेरा ऑर्डर हो गया. What's the answer, guys? Guys. All right, good. Pick the easiest one first. I like that, Priyanshu. 2A. What about the next one? Second का 1. Aditya, बिल्कुल सही. Priyanshu, that's my job, bro. Edutainment. I'm just kidding. I keep myself entertained. तुम लोग entertain हो तो this is byproduct. I need to keep myself entertained. That's important as well. All right, what were we looking for? I wanted to see the shape of NO2 is bent. Yeah, I'm pretty sure it is, but I'm just checking. Not NO2 minus, my friend. NO2. What about NO2? NO2 minus V shape is easy. Hybridization NO2. Yeah, NO2 should be. I don't know. I seem to have forgotten. NO2 में क्या होता है? sp2. Yeah, it is bent. Exactly. Okay, cool. Great. I thought I was completely forgetting something. NO2 is bent. Okay, good. Let's get back to this one. Did I do something? I did something. Oh my god, I did something. Okay, cool. No, fourth C. Third में doubt है. Okay. Fourth E. Okay. Third में doubt है. आसान वाले पहले कर लेते हैं ना. H3O plus is tetrahedral. Right? Get that out of the way. NH4 plus is also tetrahedral. ये तो कुछ अजीब होगा. Shape चाहिए ना. NH4 plus is tetrahedral. ये होगा pyramidal. Okay. ClO2 minus. अब ये क्या करें? ClO2 minus क्या करें? ClO2 एक माइनस. अब क्या करें? एक को माइनस देना है. चलो दे दिया माइनस. अब 1 2 3 4 5 6 7. तो isn't this sp3? Basically angular हो गया ना. Wouldn't this be angular? I don't know. I'm just guessing. 3 should be B. 3 में ही तो डाउट है ना. 3 में डाउट आ रहा है, राइट? बाकी तो ठीक है. 1 house, 1 pyramidal. O 1 2 3 H लिस. कुछ खा गया. एक खा गया, राइट? दिस इज pyramidal. ये तो linear. I'm not talking about that. NH4 plus सेम चीज है. Technically
you don't put that plus over there, you put the plus outside. ठीक है, ध्यान से करना ये चीज. This is tetrahedral for sure. Okay. ClO2 minus में जो doubt है, you समझे ना कैसे? How did I arrive at sp3 पहले and then bent, etc. etc. Yes, Aditya, exactly. Angular bent same ही चीज है. I feel maybe angular bent is the same thing. That's what I understand from this ना. Angular बोल लो, bent बोल लो, जो बोलना है बोल लो. It's okay. Cool. Shall we go to the next one? Yeah, fun questions. I like doing them. They are fun because they're easy to do and also इतने भी आसान नहीं कि आदमी बोर हो जाए, right? So, win. Okay, we are on question number 53. कितना टाइम बचा है? 2-3 मिनट और है to play around with a couple of more. इसका आंसर ये. Here are the answers to this. Okay. Shall we do one more? एक और we can do one more match the column. I have 2 more match the column. दोनों कर सकते हैं I feel. एक तो bond order वाला है, that's boring. ना bond order is boring. बात दूसरा वाला करते हैं. नहीं, bond order is more interesting than the other one. The other one is really boring. Okay, let's do the bond order one. Bond order one is okay. Match the species in column with the bond order. ठीक है, थोड़ा interesting है, थोड़ा interesting. It's not that boring. The other ones are even more boring. So we'll do this. Let's do this. NCERT, I love you. I don't mean to say you're boring. I'm just saying कि अभी at this point, after having done all of it for 1 year, like अगर JEE का एग्जाम अभी आ रहा है या फिर 11th खत्म हो चुका है, उस केस में बोरिंग है. Questions are great. You're awesome. Yeah. How do you do this? You have a quick trick for this, right? N2 is 14 electrons, which is 3. वही सेम चीज है. यहाँ पे कितने हैं? 7 plus 8. यहाँ पे कितने हैं? 6 plus 8. यहाँ पे कितने हैं? 8 plus 8 plus 1. Don't forget that plus 1 of the negative charge. 8 plus 8. So you have 15, 14. You have 15. No, you have 17, and you have 16. Okay. So इस भाई साहब का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3. 15 will be 2.5. Okay. 14 will be 2. 14 कौन सा है? नहीं, 14 sorry. 14 will not be 2. 17, 14, 15 मतलब 1.5 हटा दो उससे तो 1.5 हो जाएगा. 17 will be 1.5. Oh, that brings back some tragic memories. Not tragic, like serious PTSD. 1.5. You know, this is thing. It's like a meme in Bangalore. At least आजकल नहीं होता है. But पहले I have a T-shirt that says meter only because my friend from Byju's made it. He is an awesome artist. So anyway, back in the day, around 10 साल पहले जब ओला उबर कुछ नहीं होता था, तब you go to an auto guy and you tell him कि hey, I want to go from here to here, 1.5. That's it. It doesn't matter. 1.5 meter. They don't care what the meter was. They would always go 1.5 or double. Bro, traumatic times. Anyway, 1.5 is the answer for the third one. I feel 16 should be just 2, which is this simple one. Yeah, आसान सा सवाल हो गया. Yeah. Hey, what's up, Navdeep? I haven't seen you here before. Praveen is second one is D. Okay, absolutely right. Rek is 1C, 2D, 3A, 4B. Badhiya. Aditya is 2.53, 1.52. सही है. All of you got this right. Very, very, very easy. Okay, good, great. 1.5 यार मीटर. 1.5 मतलब मीटर होता है ना, ऑटो का मीटर चलता है तो मीटर से नहीं जाएंगे, बोलेंगे 1.5 चाहिए, डबल मीटर चाहिए. तो मीटर का कोई मतलब मीटर वाज लाइक अ स्टैंडर्ड ताकि बढ़ा दिया जाए. Anyway, that's what that reminded me of. I don't know why, but it reminded me, bro. मैं क्या करूं? एक दो assertion reason questions कर लेते हैं, yeah, because वो भी आते हैं आपके लिए. Assertion reason कौन सा वाला करें? ये वाला weird है, not so much fun. Ditch assertion is not that interesting. ठीक है, actually this one's interesting. ये वाला कर सकते हैं. We can do this one. How about this one? Among the two OH bonds in water molecule, the energy required to break the first OH bond and the other OH bond is the same. Reason is the electronic environment around oxygen is the same even after breakage of one OH bond. आई water molecule की बात हो रही है. ये तो अजीब सा सवाल हो गया. Have you heard of this question before or is this completely new to you? ये question कैसा लग रहा है आपको? Is this like very far out or is this something you have heard of and can analyze and कर सकते हो आप लोग? क्या लग रहा है इस सवाल के बारे में? What do you think? This is really weird. Oh, like it looks fine on my. Oh no, it's a different question. That's why it looks fine. Lovely. This alignment was bugging me. I'm fixing the alignment if you're wondering what I'm doing. Okay, yeah. What do you think about this one? Easy question. What do you think though? A is correct. Academic circles, sure, करेंगे. It is exactly time to do advanced level question and we'll do it. करेंगे. C, 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 D. Okay.
सोचो, it can't be C, guys. A cannot be true. This is just like, यार, this is the same idea as अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालो दूसरा निकालना मुश्किल होता है. Here you're breaking an entire bond, bro. How can the second one be the same? If you break that bond, what you have is OH minus. To break that second bond is going to be extremely hard when you get O2 minus. ठीक है? So both of these are false. ठीक है? इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट सेम नहीं है तो बॉन्ड का अलग होगा, राइट? Sure. Sorry about that. Yeah. If you guys have any doubts on this idea, you need to read the NCERT. All right. Okay. Since we are at the precipice where I promise you कि हम लोग करेंगे JEE Advanced के सवाल, let's get to it. There was some bond order things I had. ठीक है, इससे हम लोग bond order कर लेते हैं. Here's the first question. It's an interesting one. Okay. So from here on, the focus is going to be on JEE Advanced content, all right? Just for the last 10 minutes of this, because that's all you need. You need to know JEE Main properly, and this is the proportion that you need to spend time on as well, right? If you're doing both the exams, maybe 4/5 of your time is 70 to 80% time on JEE Main, and just a little bit, thoda tweak karna to go to JEE Advanced. This is that tweaking. That's what we're doing right now. Bond energy is defined as the energy needed to break a bond. Get this: adding energy can form bonds at times. What? Yeah, this is crazy. Like, this is going to blow your mind away. Adding energy forms bonds. That's crazy, right? The first statement itself is just so ridiculous. And this is not a true or false. Say, this is true. We'll prove to you how it's true. Pura galat hai. D, exactly, Aditya. Best example. When helium is exposed to high energy, He2 molecules form a very short duration and then they break. How does this happen? अब मुझे बताओ. Unstable. Divya ने पकड़ लिया. Divya is right on track. Divya has figured out what the trick to this is. Can anybody tell me? I wish this was like a class where I could just say mic on करो और बताओ. We'll do that when we do those JEET sessions and all. But I'd like you to talk about this, but it's okay. Deceleration and anti-bonding electrons more. Priyanshu, क्या आप लोग बड़ी चीजें बोल रहे हैं? But मुझे थोड़ा आइडिया तो दो. बिल्कुल सही आइडिया बोल रहे हैं, but can you like थोड़ा सा तात्पर्य बताओगे? थोड़ा सिंपल सरल भाषा में बताओगे अपने दोस्तों की व्हाट यू मीन बाय डिसेलेरेशन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर? इसका क्या मतलब है? देखो यार, H2 बनना तो नहीं चाहिए. फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फ्रॉम MOT. ओके, व्हाट डू आई हैव हियर? आई हैव He. ओके, blah 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 blah. What's happening here? This is sigma star 1s. This is sigma 1s, right? Now, ये तो बनना नहीं चाहिए because bond order इसका है 0, 2 minus 2 by 2. So this should not form. Why does this form? ये क्यों बन जाता है? दिव्या, प्रियांशु, what is the meaning of unstable bond? प्रवीण, आपने क्या बोला? Sorry, I didn't see. आपने बहुत जल्दी रिट्रैक्ट कर दिया. ये कैसे बनता है? How can this be formed? If the bond order 0, कैसे बनेगा? Any ideas? 4 electron He2 and 2 electrons bonding. Exactly, Praveen. 100%. Because of 0 bond order. So then, but this statement is true. This statement is true. बहुत high energy पे this exists. I'm not making this up. I can give you scientific articles. Hold on. Hold the phone. I will give you scientific articles. Existence of He2. देखो, सब जगह बोल रहे हैं He2 does not exist because the bond order is 0. एग्जिस्ट करता है. गूगल स्कॉलर्स. अरे बहुत ढूंढना पड़ेगा. बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बोला कि I'll give you research papers, but we'll do that another time. ठीक है? We'll do that another time. I'll give you the Google Scholar thing later. But अभी let's get to कैसे हो जाता है. Exactly. Navdeep, thank you. Navdeep is said hit the nail on the head. When you give it an extra energy, it's as simple as that. Normally, you do hydrogen atom में ना, hydrogen-like series में, you give energy, excitement होता है. Same idea for an atomic structure we're using. 1, n equal to 1 to n equal to 2, n equal to 3 जाता है. Now here, instead of going from 1 to 2 to 3, you'll go to the next orbital. Next कौन सा orbital? Molecular orbital. Next, molecular orbital में जाता है. And you'll be like, boss, what? Molecular orbital आया कहाँ से? What is combining? Molecular orbital है कहाँ से? Well, that's the thing, right?
We think of orbitals as things possessed by the He atom, but that's not true. I think orbital hota kya hai? Orbital is the probability of finding an electron. So it doesn't belong to कि hydrogen only has one s, it does not have two, it does not have three. तुम जितना एनर्जी दो चला जाएगा. बहुत अलग बात है कि बहुत कम ड्यूरेशन होगा, but it will happen. What will happen is this electron gets excited and goes here, and this is a very short-lived species. And इसका प्रूफ क्या है कि देखो उसका bond order is non-zero bond order, so it exists. Hence it exists. Lovely, right? Exactly, Aditya. Exactly. I like it. Divya, yes, exactly. Priyanshu, Aditya, Navdeep, you guys have figured this out. You guys had an idea and like that we're having this discussion about this. Wonderful, right? So it's possible. It's possible. Exactly. Exactly. From anti-bonding to bonding orbital. Possible. Next question. Agla sawal. And this one's even more beautiful. Right? Last question for the day. We'll spend maybe 5-7 minutes on this. Carbon monoxide forms bonds to a lot of metals. To a lot of metals. Explain which atom of CO would a metal bond will form based on. अंग्रेजी थोड़ा ठीक कर दो, ये मैंने जल्दी में लिख दिया था. I'll fix the English. But basically carbon monoxide bond बनाता है. अब carbon या oxygen, which of these forms a bond with the metal? And ये idea मुझे दीजिए based on 3 things. Electronegativity से, formal charge पे, molecular orbital model. These are things, 3 चीजें आप जानते हैं. You know these 3 things. So based on this, tell me. Explain which atom of CO would a metal bond with. अंग्रेजी ठीक है. यहाँ पे बस a होना चाहिए. To a lot of metals. A lot a होना चाहिए, but otherwise it's fine. ठीक है. What do you think? How do we start a question like this? Synergic bonding and coordination. अरे ये बड़े-बड़े शब्द छोड़ दो, आदित्य. जो आपको see, when I do my advanced वाले questions with you, I am requesting you to do one thing. आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा देर के लिए बाहर रख दो. स्पेशली जो कोचिंग में पढ़ा है ना, उसको बाहर रख दो. क्योंकि बहुत चीजें आपको मग कराते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती एडवांस में लाइफ में. बट जो बेसिक्स हैं उस पर अगर आप फोकस करोगे, यू विल फिगर दिस आउट. नाउ दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन. Yes, exactly. Carboxy hemoglobin. Sheetal, welcome back. Seen you after a long time. Forget all of that synergy bond, कुछ नहीं. मैं चाहता हूं कि आप बताएं based on first principles कि whether it bonds with carbon or with oxygen. किससे bond करेगा? Metal. Because technically we write it like this. But is this true? Is this true? That is what we'll do from first principles. ठीक है. अब electronegativity, I'll walk you through this. If you have some ideas, keep sharing them on the chat. I'll keep talking about this. Electronegativity इसकी है lower than oxygen. Okay. But metal is highly electronegative. So based on the idea of electronegativity, किससे bond करेगा? C से या O से? First वाला. We are analyzing the first case. A. We are analyzing A. What do you think? Oxygen exactly है ना प्रियांशु? राजेंद्र यही है एंड गेम. तुमको जो नाम बोला ना बोला, दिस इज द एंड गेम. दिस इज इट ब्रो. या the artist will make change to the thumbnails by Monday. This is it. जो मैं कर रहा हूं वही है आपके लिए, जेई के लिए, एडवांस के लिए, सब कुछ यही है. तो it looks like it's going to form a bond with oxygen. But this is not what happens, right? Because we know from a lot of experiments that this is what happens. Then how is it? वैसे कैसे होता है? चलो दूसरी थ्योरी लगाते हैं. Let's look at formal charges. फॉर्मल चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है? फॉर्मल चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से CO. Now I'm talking about just the molecule CO. I'm not talking about this, right? Because I don't know. I don't know if it's going to be this or it's going to be MOC. So I want to see the formal charge on this or this, right? So that I can see कि अगर जिस पे होगा नेगेटिव फॉर्मल चार्ज उससे मेटल बॉन्ड करेगा. That is why I want to do this formal charge. मैं पूछ रहा आपसे ना, what is the point of formal charge? Formal charge is a theoretical idea, but it gives you a hint as to what things could be like. Octet of carbon, okay. Praveen K. Singh, बढ़िया, पकड़ लिया. Now you've got the C according to MOT. Okay, MOT पे आते हैं. Okay, electronegativity C. We have to complete octet. आगे still has valid reason. प्रियांशु, octet तो complete हो रहा है ना ऑक्सीजन का, कार्बन का भी देखो. This is the structure. Okay, this is what I'm considering for FC. कैसे करेंगे देन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, देन डाल दो 4 माइनस 2. 2 क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले 2 और 3 ये बॉन्ड्स, -1 आ गया. ऑक्सीजन का वही सेम चीज, 6 माइनस 2 y2, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, -3 ये बॉन्ड्स, +1.
Look at this. This is crazy, isn't it? Electronegativity के हिसाब से oxygen should be, oxygen is more electronegative. But look at this. You're getting formal charge to be -1 + 1, which means the metal bonds with carbon. तो यहाँ था oxygen, यहाँ था carbon. MOT is the most wonderful and most beautiful thing. Now, I know, strictly speaking, yes, Rohan, Shivangi, absolutely right. Priyanshu, octet complete. I have answered your question. Yeah, Divya, carbon gave electrons easily owing to less electronegativity. Divyanshu, sorry, Divya, उल्टा हो जाएगा ना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करना चाहिए, बिकॉज अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है. वो क्यों देना चाहेगा? बट आई लाइक व्हाट यू आर सेइंग दिव्या. इलेक्ट्रॉन देना चाहता है. या आई थिंक वी आर सेइंग दिस दिव्या बिकॉज वी नो कि मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड किस टाइप का होता है. यू नो दैट. सो आप जानते हैं, लाइक यू नो द फैक्ट दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में से कार्बन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट इफ वी डिडंट नो दैट, थियोरेटिकली आई एम सेइंग कि वी डोंट नो. वी नो कि कुछ बन रहा है, अब कैसे बनेगा हम लोग थियरी से एनालाइज कर रहे हैं, राइट? सो फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव थियरी इट डजंट वर्क. बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट बिकॉज वी नो दैट एम्स और सी के बीच में बॉन्ड है. ओके, लास्ट वाला बिट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिट. नाउ आई नो स्ट्रिक्टली आई एम टेक दिस विद अ स्पून ऑफ सॉल्ट, राइट? नहीं, सॉल्ट नहीं, मिठाई के साथ करते हैं. आई नो ये आपके सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है, बिकॉज एडवांस का सिलेबस स्टॉप्स एट होमोन्यूक्लियर या अप टू Ne2. ये आपका सिलेबस. और मैं आपको दिखा रहा हूं अजीब चीज लाइक HF व्हिच इज हेटेरोन्यूक्लियर एटम. बट आई एम शोइंग यू दिस बताने के लिए कि विच इज ऑब्वियस, राइट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी? एट फ्लोरीन. ठीक है, कूल. या इट्स ओके मकरंद, दैट्स ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट दैट. प्रियांशु, क्या क्लियर नहीं हुआ? पूछो तो. About molecular orbital theory, I want you to take away one thing from this diagram. This diagram may look a little scary, but what is happening here is कि इधर there is a difference in energy. इसका 1s और इसका 2p. Like, bro, what are you talking about? 1s ऊपर क्यों है, 2p नीचे क्यों है? Take it with a थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा. सोचने की जरूरत नहीं. How it is, okay? And it's not in your syllabus. But the main thing is कि because F is more electronegative, because F is more electronegative, it will have access to bonding. दूसरा कलर यूज करता हूं, molecular orbitals. ठीक है? And because ये है कम electronegative, it will go here. Now I will use that same idea of C and O and I will draw the bond like this. Basically C, यहाँ पे O is equivalent to F and C is equivalent to H. Where am I going with this? It looks like जो electrons हैं, all the electrons are at oxygen in the bonding orbital, bonding molecular orbital, right? ऊपर कुछ नहीं है, there is none here. But because of this whole idea कि देखो metals can form a bond with CO only if they are similar energy orbitals. और metal का कौन सा होता है? metal का कौन सा चीज बॉन्ड करता है? metal के d orbitals बॉन्ड करते हैं, right? So I need to have similar symmetry and I need to have similar overlap. That is possible only with the anti-bonding molecular orbitals. क्योंकि pi star 2p has a similar energy to d. Bro, none of this is in your syllabus. ठीक है? मैं आपको बस थोड़ा सा extra information दे रहा हूं. Because it's cool. It's a pretty cool question. ठीक है? Which is why I can say that, okay. So although all the electrons are hanging out here near this, जहां पे bonding molecular orbitals हैं and ये ज्यादा electronegative है, but the overlap and symmetry हो सकता है सिर्फ कार्बन के साथ because pi star 2p is close to d in terms of energy and d orbitals, empty d orbitals ही partake करते हैं in MCO bond. Cool? ठीक है? All right? Yes, yes, absolutely. आदित्य, जब मैं बोल रहा था एग्जैक्टली आदित्य ने वो चीज लिख ली. सो वंडरफुल फॉर दैट. प्रियांशु, ऑक्टेट की बात है ना? ऑक्टेट तो है. वेयर इज ऑक्टेट नॉट हैपनिंग? एनी डाउट्स इन दिस? इफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा ज्यादा हो गया, it is above the level of advanced. I'll be honest with you, it is above the level of advanced. The reason why I share this with you because I found this a cool question. मैं सोचा I'll share something cool with you. If you have any doubts, I'm here. I'll help you out with this. ठीक है? I will address Priyanshu. वो कुछ बोल रहा था about octet. Octet तो है ना? Why is octet not there? देखो, there are 3 and 6 and 2. इधर भी octet है, इधर भी octet है. Both have octet. So I didn't understand octet का आप क्या बोल रहे थे. Can you help me out with that?
सी इफ यू वांट टू नो, आई नो व्हाट योर कंफ्यूजन इज. आपका कंफ्यूजन ये है कि ये तीसरा बॉन्ड आया ऑक्टेट क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज अगेन योर थिंग इज कि दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डूड. सिंस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए जो लोन पेयर थे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, दोस गाइस बेसिकली केम हियर. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है. ओके प्रियांशु, आई होप दैट हेल्प. शिवांगी, ऑलराइट, ऑसम. यू आर प्लेइंग फुटबॉल, गिव्स मी मोर एनर्जी. बढ़िया है, खेलते रहो. अंशुल, यू हैव एलियंस एट डेथ स्माइलीज, वियर्ड. फर्स्ट सब क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ. फर्स्ट सब क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट अगेन. मजा आ गया ना? एग्जैक्टली आए थे, मुझे बहुत मजा आया सब सवाल. आई लाइक इट, टेक्स insane amount of effort to find question like this, but I like doing it. I spend most of my time finding out these 2-3 questions. NCERT के तो आराम से कर लेंगे. इसको क्वेश्चन को ढूंढने में, बनाने में टाइम लगता है, but I love doing these videos. They're good fun. Okay, Shivangi is saying first sub part नहीं समझ में आया. Shivangi, look at this. Let's look at the first sub part. जिसको जो भी पूछना है पूछ लो. Now we're doing time pass. The session is done. आप लोगों को निकालना निकल जाओ, जिसको डाउट से पूछ लो. I'm here for some time. Okay, all right. Okay, Rec. Okay. It's good you could, अगर मैं जो बोला उसके बाद you could figure out, वो भी बिल्कुल ठीक है. It's okay if you couldn't participate, because I understand that the things I'm teaching you, for one reason or another, और किसी ने आपको पढ़ाया नहीं होगा, and I'm not taking any credit for this, right? मैं तो directly book से पढ़ के वो पढ़ा रहा हूँ, because people don't read books, people don't teach from books. हम लोग वो कोचिंग का जो परंपरा चल रही है वही करते रहते, उससे नहीं होने वाला एडवांस किसी का. पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक. खैर, anyway, DNF ब्लॉक का डाउट है. प्रवीण, ping me on I teach Chem. Let me just address what Shivangi had. Shivangi, what was your doubt? Can you explain, please? Shivangi, let me scroll up. Shivangi had a doubt in part 1. कहाँ गए Shivangi? Shivangi नहीं, somebody. हाँ, Divya, sorry, Divya. First sub question clear नहीं हुआ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और ऑक्सीजन की मैंने यहां पे लिख दी है. मेटल क्या होगा? मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी. लो, इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 ले लेते हैं मेटल की एवरेज, समथिंग 1.5 या 2 ले लेते हैं. ठीक है, 2 लेते हैं मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So between 2 and 2.55, that's not a good bond. That's going to be a covalent bond, which is true. But just without that information, this seems more likely. Yeah, because metal and more electronegative element should bond. This just from like this is like saying NaNCl, right? NaNCl bond because versus Na and carbon. Well, ये भी हो जाता है because sodium is very reactive. Ignore this. Some other लोग. ठीक है? Electronegativity के difference of point of view से, oxygen should bond with metal. Not this. It should be MOC. This is what we get from electronegativity. Any other doubts, guys? Okay. Very true. All right. Sir, I have doubt in DNF block, sir. In NCERT has been written that V2O5 dissociates in acidic medium VO2 plus, but that is not the case. But in this case, V is in +7 oxidation state. So is it misprint in NCERT? Arey wow. Lovely question. Why oxygen, Divya? Why oxygen? Because oxygen is a electronegative element. I think I've answered your question, but I'm just seeing your comment right now. Divya, any doubt? Let me take Praveen's doubt. It's a very interesting doubt. Divya, did you understand? या कोई doubt है? Okay. V2O5 dissociates in acidic medium is VO2 plus. And you're saying V is in +7 oxidation state. How would it be in +7 oxidation state? V2O5. Okay. Session हो गया खत्म. ठीक है, तुम लोगों को जाना है, तुम लोग चले जाओ. I'm just looking at all the interesting stuff you guys have to say, and I'm finding an empty thing to write on. Empty thing to write on. मिल गया? मिल गया. Okay, cool. Okay, so I'm going to go and open up my best friend, which is JD Lee, to see this question. Session हो गया. If you guys want to carry on, you carry on. प्रवीण सिंह के सवाल को हम लोग एड्रेस करने के लिए खोलेंगे the best. So for inorganic chemistry, JDD is like your NCERT if you want to do advanced. Okay, that's the hint. And there's no way to know these things. I mean, you just look for them. If you've read it somewhere, you know it. Otherwise, bhai, bhagwan bharose. Which is why I think when people have experience in inorganic chemistry, it really helps, right? Even after like 10 years of experience, you just have to open a book and look at it because things like this come out. Okay. So the thing is कि aqueous chemistry polymer is quite complex. Okay, it literally says the aqueous chemistry of polymerized vanadates is quite complex. I'm not making this up. All right, okay. I'm not going to try. Let me see if there's something else that's given over here. VO2, VO2, VO2.
I'll tell you what. I think it'll do us more service if we chat about this on Telegram, because it's not as easy as it would be. Okay, I'm looking at the book and I thought I'll find it right here. But yeah, VO2 plus is plus 4, VCl4 plus 5 is VF5, VO2 plus and VO3 4 minus. Plus 7 मुझे नहीं मिल रहा है. I'm not sure how you got plus 7. We'll talk about it on VO4 plus. Oh, VO2 plus is, yeah, okay. I think वो आपने कहीं पढ़ा, it's VO4 3 minus. It's not VO4 plus. I haven't seen VO4 plus. Yeah, VO4 3 minus. It's VO2 plus or VO4 3 minus. I have not seen VO4 plus. ये मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे. Khair, because this seems more and more like a conversation between me and Praveen, I'm going to take that offline. Thank you everybody who's still watching live. You're all wonderful students. I hope आपको मजा आया in this session, and keep coming and joining us for more such awesome sessions. I'll give you this PDF on the Telegram channel. You can join the channel on this link, और आकाश बायजूस वाला भी उस पे मिल जाएगा. ठीक है. Thank you everybody for time. Ziddi boy, good evening to you as well. Praveen, ping me on I Teach Chem on Telegram or on Discord. From what I could find, and I'll try and help you out, what I could find is VO4 3 minus. I could not find VO4 plus. अगर वो कहीं और है तो ढूंढना पड़ेगा. And it won't have a 7 plus thing. It will probably have some random thing like this. अगर होगा भी तो it will be like a peroxy linkage or something. So it's more likely ये VO2 plus, and like instead of oxygen being bonded to vanadium, there may be a peroxy linkage. So VO4 plus could be that. I'm just guessing. मैं guess कर रहा हूँ. I haven't seen it. ठीक है. All right. चलो. See you guys. Bye. Thank you for your time. Yeah. Ping me on I Teach Chem if you want to chat more on this, Praveen. Bye-bye. Have an awesome weekend. See you.